वो आवाज नहीं आया। यस हाँ हो गया ये आवाज स्टार्टिंग। ये आवाज बहुत ही प्यारी है लड़की की, कौन है पता नहीं। हाँ तो Boys, शुरू you know, करें? nowadays लड़की का आवाज सुनाने खुश हो जाते हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जेंटलमैन। बाय द वे बैकग्राउंड अच्छा है ना? एंड एम आई लुकिंग ब्लर? No. प्रणव? No. नो राइट, ओके, क्योंकि वीडियो में बाद में ब्लर आ जाता है। हाँ जस्ट एक बार चेक कर लो सबका वीडियो ठीक दिख रहा है कि नहीं, लेट मी नो। नहीं मेरा वो भी ये जूम मीटिंग जब एंड होगा तभी Yes. वीडियो निकलती But है। आपका वीडियो कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है, honestly. क्लियर आ रहा है। हाँ Yeah. या देखो ये बीच बीच में अभी मैसेज करके बोलती रहेगी कि हाँ हम अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, चलो let's begin. वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू प्रवचन विद पीपी। आज हमारे साथ है, बता प्रणव कौन है? Anshula Nema. Basically, this is, you know, one of the biggest episode of Pravachan with PP, because first time we are bringing guest over here, and बहुत excited है हम लोग, तो let's see how it goes. Okay, so well, Anshula, how is it going? with life. How are you? Yeah, with everything. Yeah. In general, we are asking. All right, it's going pretty good actually. मतलब अब तक like जितनी चीजें सोची हैं, somewhere in the line they are in pipeline. So yep, pretty good to be honest. Pipeline. What? So basically, so I actually had this one thing in my mind. कब से? Can you tell us? Insider information लेने का कोशिश कर रहे हैं मैं यहाँ पे. Can you tell us how many podcasts has Jayesh recorded till now? Till now, I'm not sure exactly count, but we have recorded somewhere around 40 to 45 episodes till now. Okay, like, okay. और उसमें से upload जो कितना लाइव हुआ है? जो लाइव गए हैं और जो लाइव नहीं गए हैं मिला के बता रही हूँ मैं. लाइव जितने गए हैं it will be something around 24 and 13. So you can do the math if you can. 23 and 14. Yeah, somewhere around 37 or 39 episodes जा चुके हैं. हाँ. और अभी like including season 1 and season 2. Season 2 कब आया? So basically the one which is happening is season 2. Trust me with this, before starting this podcast, Jayesh has done a lot of hard work while making his podcast grow, and changes you can see. If you can check out his previous first season wala episode, there is a lot of difference in his attire of sitting, or not just clothes. I'm talking clothes to both alag cheez ho gaya, but the way he is talking, the way the conversation goes. Yeah, exactly. And more power to you, Jayesh. So आज हम लोग अंशुला और हमारे बारे में बातें करने आए. बेसिकली बकचोदी बोल सकता हूँ ना मैं? I can use the bad words, right? कहना है पॉडकास्ट तेरा है, परमिशन ले रहा हूँ. कैसा है ना यार? नहीं the biggest question is now कि प्रणय मुसळे इतना सीरियस कब से हो गया, या फिर स्पेक्टर प्रिंस इतना लाइव से लेके आज तक मुझे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है. सीधा एफ वर्ड, एन वर्ड. I guess it's more because अब उसकी ऑडियंस के अलावा मेरी ऑडियंस भी देखने वाली है, I guess. हाँ इसलिए. और वो नहीं क्या बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल लोगों की ऑडियंस थोड़ी सी स्पिरिचुअली होती है, एकदम से सभ्य टाइप. मतलब हाँ होता है. they don't prefer. So here comes my question on this point. Anshula, do you consider yourself as a spiritual person, and why? I guess I am not exactly a spiritual person. I am in the process of becoming one, right? And why का reason है because see, पहले तो spirituality एक ऐसा term है जो हर कोई अपने तरीके से define करता है, right? Everybody has a different meaning of spirituality, although ultimately it means connecting to the higher consciousness or the higher energy which is around us, right? But then again वो reach करने के तरीके सबके अलग अलग हैं, and so I am in the path of becoming a spiritual person, but I cannot say I am a spiritual person exactly, but I am in it, like in the journey of becoming one. And how is the experience till now?
इट्स गुड, प्रीटी गुड. मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो तुम नोटिस करते हो अपने आप में चेंज होती हुई विद टाइम, यू नो, as you start practicing things, as you start reading things. कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं कुछ, या फिर तुम्हारे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, राइट? वो चीजें देखने, लाइक यू रियलाइज इट विथ टाइम, राइट? जब तुम स्टार्ट करोगे, लाइक डे 1 पे तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हें डे 10 पे भी नहीं पता चलेगा, यू नो, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर अ ईयर, फॉर 2 years, तब जाके यू विल रियलाइज, हाँ मैं ऐसे थी, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, राइट? मैं तो बोलता हूँ एक महीना बहुत विजिबल नहीं होता. या मैं तो बोलता हूँ कि 1 महीना यार अपने साथ बैठ के तो देखो, फील तो करो वो मोमेंट कि क्या लगता है. और लोग है ना गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं. एज आई गिव अप बहुत अर्ली था. मतलब मैंने मेडिटेशन पे बहुत बार गिव अप करके फिर से आया हूँ, फिर से करता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ. मतलब अभी आई एम कंसिस्टेंट फ्रॉम लाइक आई गेस 17 days. वो नहीं क्या हमारा कुछ तो चल रहा है ना प्रणव और मेरा. हाँ टू बी हमारा कुछ नहीं चल रहा है. टू बी मोर क्लिस्टर एंड क्लियर. तो एक जर्नी ऑफ एबेंडेंस करके हमने एक क्लब ज्वाइन किया है हम दोनों ने साथ में. तो उसमें हम लोग 17 दिन से अभी कर रहे हैं. शायद 17 दिन हो गए ना. We have completed the journey. The journey is over. So basically, it was a challenge of 21 days. Okay. Yeah. So that was something interesting, and that is something like this is meditation like by Deepak Chopra. So he is a very famous book writer. He writes very small books and very cute books. If you have not checked him out, do check him out. And बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स था उनके. तो उन लोग का एक क्लब आई गॉट टू नो फ्रॉम प्रणय कि एक क्लब है and they are just taking this 21 days challenge and it is very nice. You feel a different experience on each and every day. So is it a online thing or do you go somewhere? You can. I will share the links, every link with you. Just you have to listen to the. Okay, for the date 20 guided meditation, to be honest, it's guided meditation. ठीक है got it. मैं भेज दूंगा. हाँ, तो अभी I want to ask you about your social media journey. Like you started a yoga page, right? So how is the response? And like I want to know कि being an Indian, what kind of things you faced as a yoga influencer? I can say that, right? Yoga influencer. But before that, to add on this point, I could surely ask her ki how exactly the journey started, and now what are you coming up with? Because you are coming up with something new and something interesting. New. So you want the journey of like how I started yoga or the social media? Social media. Oh, social media. Yeah. All right. So social media मैंने start किया था when I was in class 7. नहीं, class 7 बोल रही हूँ. Sorry, it was in class 11th or 12th. I don't remember exactly कब, but it's somewhere इन दोनों के बीच में. So maybe around 5-6 years back. So basically, I used to write poems in class 9th. ठीक है, because I had तब मैं just shift हुई थी दिल्ली and I had no friends at the starting. Right, 2012 की ending की बात है ये. So I used to write poems just to, you know, टाइम पास करना है. कुछ तो करोगे तुम घर पे रह के, तो क्या ही करना है. So I used to write poems about then. तो मैंने एक blog start किया था पहले Google पे, Blogspot पे. But then eventually I figured out there was one poetry website called hellopoetry.com. So then I started writing there. Eventually I discovered there's one thing called Instagram. But then I used to think it is only for, you know, people who share images, right? एक होता है ना कि एक पर्सपेक्टिव हो जाता है, वहां पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं एंड यूजुअली इट्स वीडियो और द फोटोज, राइट अप का आई वाज नॉट श्योर कि कितना चलेगा क्या है. बट देन पहले मैंने उस पे एक अपना पर्सनल अकाउंट बनाया था. सो आई यूज्ड टू पोस्ट माय ओन पिक्चर्स, राइट, बट इट वाज अ प्राइवेट अकाउंट, सो ठीक है. बट देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड राइटिंग मतलब मैंने लिखना शुरू किया था स्मॉल चीजें, राइट, जो स्मॉल कोट्स टाइप के होते हैं, राइट, 2 liners 3 liners. I started writing those and putting in that private account only, right? So तब उस account पे there was something around 500 followers, right? उसमें कुछ लोग known थे, कुछ लोग unknown थे, right? So उसके बाद I decided in 2016 कि नहीं, अब I think it's time that I should make this public and I should literally start writing because I was getting a good response on what I used to post in the private account.
So वहां से फिर लिखना शुरू किया and that's how some hidden sentiments was born. उससे पहले उसका नाम उस इंस्टाग्राम पेज का नाम तो मेरे नाम पे था, अंशुला नेमा करके था, बट जो ब्लॉग था उसका नाम था इंडिगो ड्रीम्स. आई एम नॉट श्योर मैंने उसका नाम इंडिगो ड्रीम्स क्यों रखा, बट दैट वाज समथिंग जिससे मैं रिलेट करती थी उस टाइम पे. सो दैट वाज देन. But then when I had to literally start as a public account, and I gave it a thought, like properly, बहुत सोचा था उसके बारे में. अपने 10 दोस्तों से भी बात करी कि भाई मैं ये नाम रख सकती हूँ. Does this like resonate with what I do? Right? So I decided with some hidden sentiments. Basically hidden sentiments रखना था, but hidden sentiments as a tag was not available, right? So I started with some hidden sentiments. थोड़े parts अपने दिखाओगे. That's how it started. That's how it started. So basically, अंशुला के दोहे से everything started. We can say that. अभी हमने कबीर के दोहे के बारे में बात की थी before this record. आज ही तेरे आने से पहले. And we talk to you both. हाँ, मैंने इसके बारे में दोनों से बात की. आज हमने अंशुला तेरे रिकॉर्डिंग से पहले मैंने अंशुला से इसी के बारे में बात कर रहा था. I was talking to her. And yeah, poems तो मेरे को भी बहुत पसंद है. मैं खुद लिखता हूँ. I have the म्यूजिक का पेज है, हाईलाइट्स है मेरे इसमें. तो और I had a page. मैं अभी छोड़ दिया वो पेज, अभी जस्ट रिसेंटली छोड़ दिया, 3 AM कॉन्फेशन करके. दैट पेज ऑफ माइन एंड माय फ्रेंड्स, दोनों मिलके संभालते थे. बीच में कभी मैं पोएम डाल देता, कभी ट्वीट डाल देता था, ऐसा ही चलता था वो पोएम का पेज. तो अभी वो बंद कर दिया क्योंकि वो मुझे लगा कि आई गेस रुक जाते हैं, अपने इसमें डाल देंगे. तो मैंने वो बंद कर दिया. बट अभी सोच रहा हूँ फिर से स्टार्ट कर दूंगा. हाँ, so मतलब but ultimately some hidden sentiments is not anymore about just writing. मतलब yeah, it's everything that I do basically कहना चाहिए. Yeah. Then what happened? Then some hidden sentiments started, and then फिर मैंने बहुत write-ups लिखे. मतलब मैं इसमें देखिए I used to write things which I have experienced, या कोई मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड में जिसने मेरे साथ कुछ शेयर किया है, उससे रिलेटेबल कोई चीज, आई यूज्ड टू शेयर दैट. बहुत लिखती थी मैं. फिर इट वाज टिल 2018 आई वाज वेरी वेरी रेगुलर. ठीक है, मतलब तब इट वाज स्केलिंग, लाइक लिटरली बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं ना कि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो तुम. हर दिन पोस्ट करके, कंसिस्टेंटली पोस्ट करके, लाइक यू आर पुटिंग वन पोस्ट एवरी डे, राइट? वैसा वाला सीन था. बट देन 2018 और भी चीजें थी जो प्रायोरिटी में रखनी पड़ी थी. तो उस टाइम पे आई पोस्टेड बट लेस, कि महीने में 2-4 बार पोस्ट कर दिया, समथिंग विच वाज वेरी रिलेटेबल इन दैट मंथ, राइट? उस हिसाब से फिर वो करने लगी. सो दैट इज हाउ इट इज. अब तो आई पोस्ट एवरीथिंग ऑन इट, लाइक मेरी पेंटिंग्स, व्हाटएवर आई राइट, व्हाटएवर आई मतलब मैं सिंथेसाइजर भी बजाती हूँ कभी कभी, मतलब अब बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बजाती बट कभी कभी. सो दैट योगा डालने लगी थी मैं उस पे, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, योगा रिक्वायर्स अ सेपरेट अकाउंट. हाँ, क्योंकि एक पेज पे सब कुछ हो जाएगा, जंबल. हाँ, देन इट वुड बी अ वेरी बिग मेस अप, राइट? ऑडियंस बहुत ज्यादा बटी हुई हो जाएगी. तो थॉट कि उसके लिए अलग ही रखना चाहिए उसे. सबने वही सोचा. लाइक मैंने भी म्यूजिक चैनल शुरू किया था. एंड एट दैट पॉइंट पीपल वर सेइंग कि म्यूजिक में ही तू अपनी फिलोसफी डाल. बट वो बहुत ही जंबल अप हो जाता है और वो अलग ऑडियंस आती है. इस वजह से एक अलग ऑडियंस आ रही है और उस चीज के लिए एक अलग ऑडियंस आ रही है. तो मैंने बोला कि नहीं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं और उसमें अपना फिलोसफी डाल देंगे. तो ऐसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था. क्योंकि तो that is how it started. And जयेश से मैंने 2018, I guess मैं जयेश को 2018 से ही जानती हूँ. So that's how we connected. हमने एक collaboration टाइप किया था. तब बहुत चलता था ये, right? You put it on your stories that we are open to collaborations. We are, if you want to collab with us, ठीक है. बहुत लाइक एक टाइम था इंस्टाग्राम पे जब लिटरली लोग ओपन थे इस चीज से कि दे वर नॉट रियली गोइंग आफ्टर फॉलोअर्स, बट दे वर रियली गोइंग आफ्टर आर्ट, जो क्राफ्ट है उनका. तो तब बहुत ज्यादा होता था कोलैब्स करना है. लाइक लोग मंथ्स डिसाइड करते थे कि इस मंथ में वी विल बी डूइंग कोलैबोरेशन विद एनीवन हु वांट्स टू डू. इफ यू हैव एन आइडिया यू कैन शेयर विद अस, राइट? तो तब Jayesh had come up with a concept of 3 posts, right? तो उसके लिए मैंने कैप्शन लिखा था उसके फोटोग्राफ्स के लिए. So that is how I know Jayesh. Wow.
Nice. So, and then coming to the point, you spoke about your yoga. So, like, you decided to post some about like some of your yoga related post on your same page. But then you decided. But before that, actually, we wanted to know how yoga took place in your life. Okay, very good question. Very interesting answer. I have a very interesting answer to that. So, I have always been a very healthy kid. ठीक है, मतलब जो होता है ना कि जो स्कूल में लोग चिढ़ाए उस तरह का healthy kid, right? I have always been that. Right. So I have always been that. राइट सो ऐसा होता था कि चलो बचपन में तो फर्क नहीं पड़ता, लाइक 5th स्टैंडर्ड तक यू आर नॉट वेरी कॉन्शियस कि कोई क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. बट देन आफ्टर दैट जब तुम सेकेंडरी में आ जाते हो, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड यू, राइट. सोसाइटी है, लोग हैं, कॉलोनी है, घर वाले, बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड एवरीबडी थिंक्स इट्स देयर राइट टू पुट देयर ओपिनियन ऑन यू, राइट. तो वो होता था. बट ऑल्सो आई वॉज अ वेरी एक्टिव किड, मतलब क्लास 9 तक आई वॉज वेरी वेरी एक्टिव, लाइक मतलब मेरी जो पूरी वीक होती थी इट वॉज ऑलरेडी शेड्यूल्ड कि स्कूल से आना है, देन आई हैव अ क्लास एट से 4:30 फॉर अ डांस क्लास, आई हैव टू गो फॉर अ डांस क्लास. Then Tuesdays and Thursdays were fixed with 6 to 9. I have to go for a karate class. Then ऐसे मतलब डेज फिक्स थे किस दिन क्या चीज करनी है, राइट. तो पहले स्कूल से आके आई हैव टू फिनिश माय होमवर्क एंड देन आई हैव टू रश टू द क्लास, राइट. ऑल्सो बाय द एंड, लाइक क्लास 9 के एंड में आई वाज इन अ वेरी गुड शेप कहना चाहिए. बट देन हाँ, उसके बाद थिंग्स टुक प्लेस, राइट. क्लास 9 के बाद मेरी सारी एक्टिविटीज बंद हो गई थी कहना चाहिए. सो आई वाज नॉट डूइंग मच, आई वाज नॉट मूविंग मच, राइट. तो देन उसके बाद मेरी मम्मी, मतलब कहना चाहिए मम्मी से ही आया मेरे पास योगा, लाइक क्योंकि मेरी मॉम जो है वो योगा करती है, मतलब उनकी हैबिट में है करना, तो वो बहुत टाइम से कर रही है. उनको तो खैर वो कॉलेज में थी तब से वो कर ही रही है, अब भी करती है. सो उनके देन शी वाज लाइक कि तुम योगा करने लगो कम से कम, राइट. सो आई जॉइंड फॉर 2-3 months इन क्लास 10, राइट. 2-3 महीने करा था मैंने. गर्मी की छुट्टियां हैं, ठीक है कर लेते हैं, सुबह उठ के जाना है योगा क्लास, योगा करके वापस, राइट. वो हुआ क्लास 10th में किया, ऐसे ही मैंने सेम क्लास 11th में किया. वही 3 महीने के लिए ही करती थी, मैं छोड़ देती थी, राइट. बट वो 3 महीने में क्या होता था, कोई मेजर वेट लॉस नहीं होता था उससे, बट इट्स जस्ट दैट योर बॉडी लुक्स टोन्ड अप, राइट. कि तुम जो तुम्हारा फैट है बॉडी में इट विल डिस्ट्रीब्यूट इवनली ऑल अलोंग. सो ठीक है. फिर बट आई वाज द सेम पर्सन जो बहुत लोग कहते कि योगा से कुछ नहीं होता, लाइक योगा इज कुछ मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे तुम्हें अपनी बॉडी पे, राइट, जो कहते हैं ऐसे. So I was the same person. मैं उस कैटेगरी में आती थी कि मेरे को भी लगता था योगा से कुछ नहीं होगा, अरे ये सब बकवास है, राइट. कुछ नहीं होता इससे, ना मेडिटेशन करने से कुछ होता है, ना योगा करने से कुछ होता है. I was the same person who used to think this, right? But then lockdown happened in 2020. अब तो और भी बाहर नहीं जा सकते, राइट. एटलीस्ट उससे पहले तक 2020 के मार्च तक आई वाज गोइंग आउट, कॉलेज जाना था, कुछ ना कुछ करती रहती, पार्क में वॉक कर ली, पार्क में रनिंग कर ली, राइट. बट अब लॉकडाउन हो गया, अब क्या करोगे, खत्म, यू कांट डू एनीथिंग, राइट. सो देन वन फाइन डे मेरी दो फ्रेंड्स कहना चाहिए. सो एक के साथ मैं कथक करती थी. We had started कि we'll do कथक every day, like we'll revise whatever we had learned previously जब हम करते थे. And तो हमने वो start किया था. And there was this one other friend of ours who wanted to start some physical activity like yoga or something like Zumba, something like that. तो they had decided कि जिसके साथ मैं कथक करती थी और जो दूसरी फ्रेंड है कि they both will start with yoga. So my friend जिसके साथ मैं कथक करती थी, she said कि we are starting with yoga and my mom pushed me कि तुम भी कर लो, ठीक है, इनके साथ तुम भी कर लो, क्या हो जाएगा, 1 घंटे करना है, कर लो. So we started in जुलाई के स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया योगा करना. So हम 3 लोग थे and we used to do yoga every day, like वीक में ऑलमोस्ट हर दिन. So we used to take Saturday और Sunday, एक दिन, दोनों में से किसी एक दिन we used to take off. And
that was the best decision I guess जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में in terms of physical health लिया है कहना चाहिए, because since then July 2020 to now I have seen a lot of change, not in terms of मतलब सिर्फ weight और inches के terms में नहीं, but बहुत सारी चीजों के terms में, एक overall अपने आप को जैसे तुम feel करते हो ना एक जगह बैठने के बाद उसके terms में. So that is how I was literally pour into yoga कहना चाहिए. But this is very nice. And yeah. I hope मैं बहुत लंबे answers नहीं दे रही हूँ. No, it's okay. It's okay. Basically, you are the one for which we are doing this. So basically, you are the guest. तो आप जितना ज़्यादा बात करोगे, उतना ज़्यादा we can explore things out. We can understand things, and it is very fun. All right. And honestly, Jayesh, if you are watching this, make a podcast with her because she is up for podcast for sure. Yeah, you are asking something, Pranay. Yeah, so I want to ask you कि see you are now doing the yoga thing जो अभी मतलब तूने पूरा story बताया, but my question was here कि you think like अभी you are the person who was being an influencer through this genre, right? You can call the yoga genre for this thing, okay? So now you feel कि वो चीज को भी like वो बोलते हैं ना monetize करने की कोशिश चल रही है लोगों की तरफ से. That thing was a very precious thing जो हमें पास्ट में से बहुत पास्ट में से मिली, but now the Western countries are trying to make more money out of it. Like you have heard about beer yoga, goat yoga, right? Yes. So yes. These things are not that up to the mark. Like वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक अच्छी चीज को भी खराब कर देना. हाँ, exactly. So I want to know your point of view about this thing. कि like ये कैसे हो. ठीक है, I got your point. So basically क्या है, योगा की meaning जो है, right? योगा की meaning is connection. It simply means connection, like connecting, bonding, unite. It simply means that, right? अब तुम कहाँ connect करना चाहते हो, right? जो हमारे texts पे लिखा है, जो हमारे scriptures में लिखा है, जो योगा के scriptures हैं, वहाँ पे it is mostly said about connecting yourself with the higher energy. That is yoga, right? But then see, एक बहुत बड़ी डिफरेंस है जो इंडिया में योगा का मतलब है और जो वेस्टर्न कंट्रीज में योगा का मतलब है. वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट? व्हेन यू से यू आर डूइंग एन आसन, लाइक अब मैं आसन पे इसलिए जा रही हूँ बिकॉज जब हम योगा कहते हैं मोस्टली पीपल थिंक इट इज ओनली अबाउट आसन्स, राइट? आई एम नॉट सेइंग पोज हियर, आई एम सेइंग आसन्स. दिस इज द ओनली डिफरेंस व्हिच इज देयर इन जो एक्चुअली में योगा है एंड व्हाट इज बीइंग सर्कुलेटेड अराउंड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां से वो उस चीज को चेंज कर रहे हैं. वो जैसे तुमने कहा बियर योगा, मैंने भी देखा उसके बारे में, आई वाज लाइक this does not make sense, right? Which yoga? I didn't get the word. Beer yoga. Beer. Basically उसमें what they do is they keep a beer bottle in front of them and it's kind of a motivation, ठीक है? So they'll do something and then drink it, something like that, if I'm not wrong. मतलब एकदम प्योर हो जाओ और फिर से गंदे हो जाओ. Exactly. Basically it's like that. So it's just like reading a no smoking book and keeping cigarettes as a bookmark. Exactly. Wow. Exactly. Right. So जो अब क्या है कि आसन का मतलब होता है no addictions. Okay. आसन literally मतलब अगर तुम उसको literally translate करोगे it means no addictions, right? And जब तुम वही चीज when you say आसन and when you say pose, right? अब इंग्लिश में जो नाम होते हैं those are very similar to हिंदी में नाम, right? Like there's कपोत आसन, that is pigeon pose. कपोत means pigeon and आसन के लिए English word उन्होंने निकाला है pose. But then, right? So the word pose never really means no addictions, right? It can never mean no addictions, right? It is something which is misleading, कहना चाहिए. But when you say आसन, so आसन is something कि you are actually trying to get rid of things which are not good for you, right? By staying in that particular position or form for minutes, seconds, whatever, right? So this is the basic difference जहाँ योगा सेल हो रहा है बाहर क्यों हो रहा है, right? Because ठीक है
they are doing things right. ठीक है, अब वो जो आसन कर रहे हैं that is right, but then जो मेन एसेंस है वो तो है ही नहीं. अभी रिसेंटली हुआ था कि रिसेंटली एक न्यूज आई थी, आई डोंट नो, कुछ मंथ्स हो गए, इन विच यूएस, आई गेस यूएस था, आई एम नॉट श्योर कौन सी कंट्री थी वो एग्जैक्टली, बट देन द न्यूज वाज कि दे आर अलाउइंग योगा इन स्कूल्स. ठीक है, इट इज सम फॉरेन कंट्री, राइट? दे आर अलाउइंग योगा इन स्कूल्स, बट they are not allowed to say namaste in it, right? You cannot use namaskar. So people chant om, but they don't use the word om. They say oh, just oh, right? Oh. So the essence hai, right? Ab om is also a 3-syllable word, right? It has 3 different sounds. है और ना? उसमें हाँ वो frequency rate है something. हाँ, It's exactly. something So like basically yes, Uma. yes, exactly. So when you say it, it basically brings all the vibrations from your stomach to your temple, right? जो core तक होता है. You can feel the vibration in your body. ठीक है, जो वो word pronounce करके आती है. But then at the same time, if you say oh, it does not produce that same vibration. Exactly. वो vibration ही नहीं है. I seriously feel it is very much incomplete. To be more, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है. तो योगा की एसेंस ही खत्म हो जा रही है जब, सो इट इज वेरी इजी टू मोनेटाइज इट, राइट? अब तुम योगा को विद द एसेंस अगर तुम मोनेटाइज करना चाहो, इट्स वेरी गुड. ठीक है, करो. एवरीथिंग इज मोनेटाइजेबल, राइट? देयर इज नथिंग व्हिच इज नॉट मोनेटाइजेबल. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी. सिंपल, राइट? बट देन selling it with its essence is important. That is what I feel. कि यहाँ पे it is something wrong which is going on. मैंने जो start किया था, मैंने जो start किया, it is not about exactly monetizing, but it's more about sharing my journey. Okay. But honestly speaking, if you want to monetize something like yoga, do it with the actual, whatever teaching has to be done in a proper way, class, instead of the class or studio. हाँ, because ये एक रिटर्न या फिर रिफ्लेक्स वाला जो फैक्टर है वो इवेंचुअली आपको हर्ट करेगा अगर आप उसको गलत तरीके से सिखाओगे. You feel you are doing a good deed, you are earning money, but it won't come back to you on a but then it should be right. Yeah, let me tell you a किस्सा. I still remember the day I was a musician. मैं म्यूजिक करता था तभी ना. I used to talk to very different kind of people. अलग अलग लोगों से messages आते थे. And at that time a guy from I guess Hungary, who talked to me, and I said I am an Indian. ठीक है, and we were debating about something कि I guess British and that I was debating with him, and that guy literally said कि मैंने बोला कि हम लोगों ने तुम लोगों को योगा एंड मेडिटेशन दिया है, and that guy said योगा एंड मेडिटेशन इंडिया से थोड़ी है, कैलिफोर्निया से आया है. I was like, why? What? Seriously? Acceptance चाहिए ना, हमारी खुद की acceptance इतनी लेट आई है उस चीज को लेके. हाँ, तो ऑब्वियसली कोई और क्रेडिट लेके जाएगा उसके लिए. हाँ, अभी इसमें इंडियंस का भी दोष है उतना ही कि हम जो है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया. हमने जिमिंग कल्चर रहा है यूएस से इंडिया में, और उसको ज्यादा भाव मिल रहा है rather than योगा एंड मेडिटेशन थिंग, क्योंकि हमें एक वो इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग है कि हम उनसे कहीं कम ना पड़ जाए, ये वाला जो फीलिंग है ना. ऑल्दो हमारी जो बैकग्राउंड है, इट इज वेरी रिच इन सब चीजों में. हमारी सब चीजों में when it comes to history, Indian history या Indian scriptures बहुत ज्यादा rich है, but at the same time we don't acknowledge it much. और हम एज अ ह्यूमंस वी डोंट नीड लाइक फॉर द एक्सरसाइज. इफ मैं तो मानता हूँ, अभी आज ही हम लोग जहाँ पे गए, मैंने आज तुमसे भी बात की उस बारे में कि इफ यू आर यूजिंग समथिंग लाइक डिफरेंट, लाइक रादर देन योर बॉडी, देन इट्स नॉट योर थिंग. ऐसा मेरा मानना है. Very good analogy. But yeah, if you are using but can you explain this a little bit more? That would be way better. Yeah, like if you are, see, आज ही हम लोगों ने बात की इसके बारे में, वेगनिज्म के बारे में, प्रणव. If you remember that तो that argument was कि when we started using stones, we started killing animals. ये आइडिया था. तो हम लोग स्टार्टिंग से वेगन ही थे.
If we can't kill animals with your nails and the teeth. No, but vegan ka to definition is different, na? Like you cannot say vegan, you can say vegetarian or Vegetarian herbivorous. basically. Yeah, vegetarian is more Because better word. vegan is you More don't better, consume yeah. any product, like Any any product product, from not even animals, milk, yeah. paneer, curd, Yeah. nothing from Yeah, animals, ठीक है, right? So, चलो. But let's consider ourselves as a herbivorous. So yeah. when you are exercising, if you are using any dumbbell, then it's an instrument made of a metal, right? So वहां पे तुम्हारा वो जो एनिमल फैक्टर था वो निकल गया. हम एज अ ह्यूमंस इंडियंस वी यूज our body to make these things, like basically surya namaskars, push-ups But then, I guess. but then it all comes up to basically using the muscles, na? तो तुम डबल को तो एक एक्स्ट्रा चीज रख के कर रहे हो, but then ultimately you are actually using your muscle only, right? I know you are using your muscle only, but the same thing you can do with a push-up, right? Same thing No. happens. But then, Yeah, maybe. But then तुम पुशअप करते, like see basically डंबल्स यूज करने का लॉजिक क्या है? तुम नॉर्मली हाथ ऊपर नीचे कर सकते हो, बट तुम डंबल्स क्यों यूज करते हो? बिकॉज यू नीड टू वर्क योर मसल्स मोर, राइट? तुम एक लिमिट के बाद बॉडी गेट्स यूज्ड टू समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी देयर, या राइट? उसके वजह से वी यूज डंबल्स, राइट? ठीक है, वो एनालॉजी थोड़ी बहुत सही है. हाँ, थोड़ी बहुत सही है, थोड़ी बहुत गलत भी है. आई एम नॉट लाइक क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस. आज ही तो सोचना शुरू किया है. अभी वो टाइम लेगा उसके बारे में मुझे स्टडी करने में. परफेक्ट, वो टाइम लगेगा. But now, as we spoke about dumbbells, I actually have this one experience. My mom is a yoga teacher. Okay, certified yoga teacher. So, and I am fat. I don't do yoga. I'm so sorry. I want to do it, but I don't have time. So sorry. But still, the thing is ki when I was young, when she actually passed her exam, when I was in like 8th, 9th something, and she used to do this one exercise, breathing के साथ. You have to just hold your hands like this and like up and down. So while lifting up, you have to do it like you have to assume. Yeah, you have to assume that you are lifting actually something. Yeah, you are lifting something. And do you think कि योगा में जो है या फिर अपना जो मेंटालिटी है उसमें जो एक ये है assumption है कि you are lifting something heavy or you are pulling something heavy back, उससे भी मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा? This is something which बिल्कुल पड़ेगा. Because see, जो फैक्ट है, like people manifest thing, है ना? जब तुम manifestation करते हो, like मैं नहीं करती बट लोग करते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है? You have to think about एक ही चीज, right, which you want in your life. You have to constantly think about it as well as work about it, not just think about it, right? You have to work accordingly. तो जब तुम किसी चीज के बारे में सोचने लगते हो, राइट, तुम मतलब नॉर्मली भी देखो, व्हेन यू थिंक कि नहीं यार मुझे ये काम कल करना ही है, लाइक तुम दिन में 5 बार सोच लो उस चीज के बारे में, तो जब तुम रात में सोने जाओगे यू विल स्टिल नो कि मेरे को कल सुबह उठ के ये काम करना है. यू विल रिमेम्बर इट, राइट? दैट सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू इमेजिन समथिंग. इमेजिनेशन इज वेरी वेरी पावरफुल, राइट? तुम इमेजिन करके हम ड्रीम्स देखते हैं. Those are not exactly things which happen in our life, but वो कहाँ से आती है is because we imagine things which have already happened, right? जो हमने already देखी हुई होती है, हम उन सब का एक मिक्सचर बना के हम कुछ एक नई चीज सोच रहे होते हैं हमारे दिमाग में, यार जो भी हमारे दिमाग में आती है. तो हाउ डज इट कम? वो एक इमेजिनेशन है, राइट? अब इन्वेंशंस हो रहे हैं, दैट इज आल्सो इमेजिनेशन. किसी ने सोचा, राइट, कि भाई आईपॉड बनाना है उतने से छोटे पॉकेट में फिट करने के लिए, तो एक इमेजिनेशन की उसने कि भाई इसमें तो ये फिट आ सकता है, राइट? सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. सो व्हेन यू डू द सेम with muscles, right? When you think ki you are holding something very heavy, right? You're automatically होता है कि तुम दिमाग में आ जाता है कि I have to put in more efforts. उस point पे I have to put in more pressure, या because ज़्यादा मेहनत करनी है, उस एक मेहनत लगेगी वो चीज करने के लिए, right? So that will automatically make your muscles do the work. Wow. So basically, imagination can give you strength also and might lose your strength also. Yes, exactly.
वो अभी तेरी इमेजिनेशन पे तू how you How imagine you want to पॉजिटिव, do it. हाँ पॉजिटिव और Of course, नेगेटिव of उस course, पर डिपेंड of course. करता है. और But- हमारे प्रणव साहब के तो किस्से है ना इमेजिनेशन के, उनको चलते हुए रास्ते चाहिए. We talked I about have, this in we the have, podcast. But then चलते हुए रास्ते हैं ना, there are like I don't know, जैसे okay. मतलब escalators उसका होते हैं, imagination उसका देखो. एक flat My version भी है. I'm imagination not sure उसको क्या was- कहते हैं. So my imagination was whole different thing. Okay, I was expecting. Okay, तो बचपन में we are like 2020 में उड़ते कार रहेंगे, and that age I'm talking. Okay, I had this imagination in 2020 there won't be any traffic kind of stuff because people will leave their houses from their windows or maybe from their balcony, and as the Okay. car moves there will be some kind of base. Okay, there will be some kind of base which is moving along with the car, so the car can elevate as much as they want. And so that was completely bizarre. Okay, अगर तुम मेरे imagination को picturize करोगे, मतलब it हाँ. is, हाँ, it is very confusing at the same time. It is very, मतलब यार ऊपर तो मतलब एकदम रोड ही रोड होंगी फिर से. हाँ, हाँ, exactly. बट जब कार पास हो जाएगी उस रोड से, वो रोड गायब. हाँ, नीचे अब exactly. रोड वो it is like Harry Potter पे moving stairs थे ना, वैसा हाँ. कुछ हो जाएगा. हाँ, but यहाँ पे moving road and that is just below the tire or for the movement. हाँ. हाँ, तो जैसे स्पीड बस, बढ़ेगा वो correct. मूविंग रोड बढ़ेगा एंड उसका मतलब उसका भी स्पीड मतलब फास्ट हो जाएगा. दैट वाज समथिंग लाइक क्या क्यों ठीक है, यहाँ पे अभी तक गाड़ी उड़ी नहीं है, रिलैक्स. There is a flying car but not that level. And bro तू कहाँ था? Yeah. But still I actually love that imagination still till date. And I actually feel कि अरे यार क्या सोचते थे हम वो पॉइंट पे. एक टाइम पे अभी हम लोग बस इतना ही सोचते हैं, 1K सब्सक्राइबर्स वो ही सोचते हैं. वो एक इमेजिनेशन हो गया अभी. But नहीं, that Imagination तो नहीं कहना चाहिए. It could be a goal. it can be a goal. Yeah, Yes. वही. It can be a goal. नहीं, soon. but imagination will be like 1K के बाद कौन सा वीडियो, क्या वीडियो, what will be the 1K video. That is imagination. Yes, that is for sure. मेरा अभी imagination. फिलहाल मेरा इमेजिनेशन कुछ अलग ही चल रहा है. अगर दुनिया में वॉर ही नहीं होती तो ऐसा इमेजिनेशन बहुत ही मतलब पीसफुल माइंडसेट से जीता हूँ. Impossible है. दुनिया ही नहीं अभी होगी फिर. कैसे दुनिया नहीं होगी वॉर्स की बिना? दुनिया नहीं होगी in the sense तो humans won't survive it. मतलब इतना पीस रख के क्या करेगा ह्यूमन? There won't be anything to do, right? Again, Pranay, today only we had a discussion on this point. There should be a black, there should be a white, and there is a gray. Grey. Yeah. तो तुम सिर्फ व्हाइट में नहीं जी जब सकते, तक तुम सिर्फ बैलेंस ब्लैक नहीं है. हाँ, exactly. थेनोस सर क्या बोल के गए हैं? There has to be a balance of everything. Good and bad. It is required. But my perspective was कि like अभी ना रिसेंट में देखो पेट्रोल प्राइस हाइक हो गए बहुत ज्यादा. So उस पे आई एम अ लेफ्ट. हाँ, आई एम अ लेफ्टिस्ट. ओके, तो लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि अभी ना हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज आए हैं तो पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ेगा. राफेल आया है तो पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ेगा. तो उस माइंडसेट पे आई अग्री. हाँ, आई अग्री एट दिस पॉइंट कि हाँ ये ठीक है, ये बराबर आर्ग्यूमेंट है. तो मेरा मानना है कि ठीक है वॉर ही नहीं करते तो प्राइसिंग ही नहीं बढ़ेगा. ऐसा मेरा इमेजिनेशन है कि अगर हम लोग नहीं बढ़ेगा, हाँ बट प्राइस नहीं बढ़ने के अलावा there will be no human interaction as well because everybody is at peace. And when everybody is at peace, तुम क्या बात करोगे जाके किसी और से? You won't have anything to complain. हाँ भाई कैसा है? नहीं, let's do this practically. हाँ भाई कैसा है? हाँ मैं मस्त हूँ. Okay, bye. That's it. इतना भी दे रहे, इतना भी कम इतना होगा. मे बी एलियंस आ जाए तब तक. So you are bringing an external entity. हाँ, तो the imagination is going to turn into a Christopher Nolan movie, nothing else. Maybe. But हाँ, मेरा एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है ना लोगों का कि जब एलियंस आएंगे तब ह्यूमैनिटी साथ में आके लड़ेगी. I don't think so. It's gonna happen. I really don't. तुम्हें ये कैसे पता है कि अब तक एलियंस नहीं आए हैं? पहली बात, how do you know कि एलियंस? हाँ, maybe. वाह, ये कितनी डार्क है यार. This is because इसीलिए बोलता हूँ आवारा मुसाफिर शो को देखो, समझ में आएंगे बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें.
हाँ. Anyways, I just love to pin things in between. Anyway, Okay. so main thing, as we are talking about imagination, we are talking about imagination. Have you experienced anything positive through imagination which you would like to share with us? Positive. Yeah, Or negative? imagination. Like I'm not sure. मतलब imagination बस हो जाती है कभी. I don't remember any instance कि मैंने particularly कोई चीज imagine करी हो and you know I have gotten it. Yeah, I have done it, something like that. But I imagine कि in future मेरी life कैसी होनी चाहिए, right? So I'm working in it, like उसके Okay, in direction में process. work कर रही हूँ मैं. In process, right? In process. And yes, Yeah. even I feel. Okay, continue. Even I feel कि you achieve your expectations and imaginations, which is it is very tough. I know that, but still. Yeah. Yes, sir. So I want to ask you कि do we imagine future or do we interpret future? That's my question. Like हाँ, दोनों में फर्क है. Imagine करना, imagine करना imagination is a unrealistic term, जो कि एक normal human के लिए वो मतलब possible नहीं है वो चीज. It's like a different world in itself. कहना चाहिए. And interpretation is basically कि yeah, it's a reality. हाँ, और मैं वो रियलिटी खुद मतलब मैं खुद अभी सोच बैठ के बोल मैंने एक it's something कि जैसे अभी if you are doing something like let's say you are working with ICICI, right? So you're working with ICICI, तो interpret करना यहाँ पे future is कि we assume मतलब अभी तक की लाइफ को देख के we think कि तुम हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में ही कुछ और करोगे, right? I'm just giving an example right here. कि ठीक है तुमने with the current scenario, like for me अगर मेरी graduation is BTech in computer science, right? तो for obvious reasons anybody will interpret कि हाँ ये जाके किसी MNC या you know some other software company उसमें काम करेगी. That is the basic future interpretation, right? When you think. But then when you say दूसरा word क्या use किया है तुमने imagination के साथ? Interpret. नहीं, interpret तो मैंने बता दिया. और imagine. Oh, okay. Imagining the future or interpreting the future? That was the question, right? Yeah. So when you imagine, जब तुम imagine कोई और नहीं करेगा तुम्हारे लिए पहली बार. Interpret हर कोई कर सकता है तुम्हारे लिए. Even you can interpret, but imagination usually जो outside से आएगी वो that would be almost equivalent to interpretation, but then imagination would be कि अगर मैं सोच रही हूँ कि I would you know have my own business instead of working in a company, and you thinking कि I would be a content creator and not working in ICICI Bank or any banking firm, let's say, right? That is your imagination, not interpretation. But जब वो outside source से कोई वही same चीज imagine कर रहा होगा, basically the person won't be imagining you being as a content creator or me being as a woman, you know, who is having her own business, but instead जो interpretation होगी वो उनकी imagination भी होगी उस टाइप. So basically दूसरों की imagination अपने लिए interpretation है kind of. Exactly, हाँ. Maybe sometimes मेरा तो ऐसा point of view कि हम भी खुद की life interpret करते हैं. Like sometimes we see it. हाँ, we do it. Like जब तुम plan कर रहे हो future, when you are planning तो वो interpretation नहीं है. हाँ, that is interpretation only, right? Yeah. Okay. So maybe sometimes coming back to the main point, yoga, which is थोड़ा बहुत दूर रह गया. So coming back to the main ठीक है ना, that's the point. ना, that's the point of our Pravachan. हाँ, ये that's a good thing in a podcast, by the way. That's a good thing in a podcast that you can take a topic from one thing to another. That's a good thing. Exactly. And the thing which I actually wanted to ask is कि आसना तो एक phase है, ठीक है? Can you tell us little bit something about Tratak or Neti or all these things? ये किसी को बहुत कम लोगों को पता है, और ये नाम सुन के ही प्रणय का फेस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है. बहुत भारी शब्द यूज हो चुके हैं. वो कुछ तो नहीं था, नाक में से पानी निकाल तो उसको क्या बोलते थे? That is जल नीति. जल नीति. हाँ. नाक में से पानी.
Okay, that is Jal Neti. So there are two kinds of Neti, basically Jal Neti and Sutra Neti, and both are cleansing processes. मतलब वो क्रिया में आते हैं कहना चाहिए, right? And Tratak is basically concentration, right? अगर तुम कोई small object के ऊपर concentrate करो, like usually बोलते हैं कि कैंडल जला के उसके टिप पे concentrate करो, right? Focus करना. पूरा तो अंधेरा कह सकते हो, हाँ, तो कह सकते हो कि it's a step towards meditation, right? But then again it's a kriya, right? So ये सारी जो अभी भारी भारी शब्द यूज किए गए हैं, those come under क्रियास, ठीक है? तो क्रिया बेसिकली वो चीजें हैं जो हम कोई भी योगा प्रैक्टिस करने से पहले कहते हैं कि करनी चाहिए, right? And these are not just योगा करने से पहले करनी चाहिए वाली चीजें, but those are basic cleansing processes which our body needs, right? तो वो cleansing processes हैं, like जल नेती जो उसने कहा कि नाक से पानी निकालते हैं, what does it exactly do, right? It's तुम्हारा cleans sinus your है, cleans your nasal sinus cavity, right? Sinus जो जिनको sinus की problem होती है, they should do it. जो तुम्हारा यहाँ पे जो कफ जो फ्लैजिम होता है वो जम जाता है, it helps in removing that, right? Yeah. Say Sutra Neti hai, so in that you put a thread from your nose and you take it out from your mouth, right? So ये सारी चीजें हैं, like it sounds very weird and easy. very yuck, creepy, but no, not easy. It doesn't sound easy. I'm so no, sorry, people think it's easy. No, it's not easy. Like, रहने दो. my friend did a magic trick on this point, and for that he learned the whole process. Okay, right. And so he performed it as a magic trick. So he told and in me. And in fact, अभी तो COVID चल रहा था, तो everybody started like jalneti karna is a prescribed thing, right? तुम कर सकते हो jalneti in COVID. It's a good thing. And there are many other things, helps. Pranay. Yeah, it helps. It not for yes, COVID. Yes, it does. Does it help for COVID? Like, I want to ask. It not exactly, but it will help you in having the proper hygiene. कहना चाहिए. Maybe right? For the thing like immune system. Maybe. You can not exactly immune system, but अगर तुम घर से बाहर जा रहे हो, like अगर तुम्हारा हर दिन घर से बाहर जाना है काम, right? जो तुम्हारा काम है उसके तुम जाना ही पड़ रहा है. So basically, जब तुम inhale कर रहे हो, although mask है, everybody is using masks, right? But mask there could be a chance, right? There could be a chance. कभी हो सकता है कि there's some particle which is in the air. किसी ने छींका होगा, खाता होगा. But not just that. Basically, what we want to tell is, what Anshula wants to tell is कि ये जो है ना, this is nothing else but cleaning yourself internally. हाँ, exactly, internally. जो भी नहाते हो, ब्रश करते हो, पॉटी करते हो, internal clean. Exactly. Same. Exactly. So, और इसमें भी बहुत सारे और interesting terms है. Thanks to my mother, because of this, I have seen everything. I have मैं नहीं हूँ इस सब में. But yeah, but yeah, I'm just learning about this. मैं पूरा एकदम ऐसा fresher हूँ इस चीज में. I do meditation. Yeah, बस नहीं, but meditation मतलब मैं भी बहुत frankly बताती हूँ, मैंने भी इसमें से बहुत सारी क्रियाएं जो मैंने आज तक करी नहीं है, right? बहुत सारी क्रियाएं मैं बताती हूँ. मैंने अभी रिसेंटली अभी तक रिजल्ट नहीं आया है उसका, आई एम नॉट श्योर क्या होगा आगे, बट आई हैड गिवन दिस सर्टिफिकेशन एग्जाम फॉर बीइंग अ ट्रेनर, राइट? योगा टीचर, राइट? तो उसके वजह से आई हैड टू रीड थिंग्स अप, राइट? How was your experience? How I know things. How was your experience? Please don't ask. मतलब यार, see, अगर एक्चुअली में देखा जाए तो जो सिलेबस है उसका, राइट, जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल जो है, जो सर्टिफिकेशन है, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये सर्टिफिकेशन है, राइट? तो उसका जो सिलेबस है, इट इज वेरी वेरी गुड, कहना चाहिए, कहना बहुत सही है वो. इट हैज एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम हमारे स्क्रिप्चर्स टू व्हाट यू शुड डू टू एवरीथिंग. लाइक योगा के सारे टेक्स्ट हैं, उसके अलावा देयर भगवत गीता का पार्ट आल्सो इन इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब उनने पूरी चीज कवर करी है, A to Z ऑफ योगा, राइट? उसके वजह से मैंने पढ़ा है ये सारी चीजें.
that is how I know things. Will our audience be able to see anything related to this as in content form? That's what is the next thing. It could, like, see, क्या होता है, these things are actually not to be done खुद से, right? At least first time तो you should do it under someone's guidance, जिससे पहले से किया हो, right? And when you put it, जब भी तुम कोई चीज ऐसा content put out करते हो, जरूरी नहीं होता कि सामने वाला लिटरली उसको फॉलो करे, राइट? पीपल, अब तुम्हें कोई देख लेगा कि जल नीति करनी है, राइट? अब तुम जल नीति का पॉट लेके नाक में डाल दोगे, अब कोई बहुत अंदर डाल सकता है, उसकी जो नॉस्ट्रल होती है जल नीति की पॉट की नॉस्ट्रल, कोई नाक के अंदर ही डाल दे, फिर क्या करोगे? राइट? किसी ने बहुत बहुत गर्म कर दिया पानी, किसी ने बहुत नमक डाल दिया, देयर आर थिंग्स, राइट? तो यूजुअली आई मतलब पर्सनली मैं शायद नहीं डालूंगी. Right. Is it risky? Of course, without a volunteer. And I have done all this, okay? I have done this all except the thread thing because I was very scared. But I have done this. There is even one process where you have to drink more than 7 to 8 glasses of water. And you have to vomit it. Vomit it out, the whole thing. Yeah. And it cleanses your whole stomach. Digestive tract को clean करने के लिए होता है. उसको I think वांति बोलते हैं, if I'm not wrong. I am not sure. मुझे भी याद नहीं आ रहा उसका word. Then there's उसके अलावा there's Dhavti, which is for, you know, cleaning your excretory. हाँ, ठीक है, जो तुम्हारा excretory tract है उसको clean करने के लिए also there is one क्रिया. जितने तुम्हारे systems है ना body में, कहना चाहिए सबको clean करने का there is one process. हाँ, एक process है, exactly. So actually that's what I want to tell to the audience कि this is something which is part of yoga. ये क्या योगा के बारे में बात हुआ है ना थोड़ी देर कौन सा क्रिया? कुंजल क्रिया. हाँ. मैंने अभी सर्च. It could be. Thanks to Google. So yeah, but the thing is कि ये जो कुछ भी बात हो रहा है ना यहाँ पे, that is the major part of yoga and not keeping a bottle of beer or a coffee. So what is goat yoga? Have you? मैंने देखा नहीं है, but मैंने सुना है इसके बारे में. मुझे नहीं आता. But if I remember, there is goat yoga. This is something related to body of goat and your body. मतलब वो दोनों का मतलब basically. I am not sure what this is. मैं ये पहली बार सुन रही हूँ क्योंकि. Basically something. Greatest of all time yoga. ना यार. This is something I guess मुझे लगता है. Have you ever heard of something कि like वो नहीं कि animals की body पे slim करके कुछ तो करते थे. मैंने किसी तो movie वगैरह में देखा रहेगा. I remember. If I remember, वो something like that होगा. मतलब वो थोड़ा सा almost sexual activity होगा और then it gives you vibes of yoga thing. Maybe. No idea. But I can say this one thing. Yeah, but I can say one thing. There are many asanas which are quite related to animals. Okay. There are many asanas most of the yoga asanas are named after animals, not related, named after because वो करते हैं वैसी चीजें और वैसे दिखता है, you look like that exactly वो animals के ऊपर ही है, कहना चाहिए. Yoga is basically nature put into you know compressed form, कहना चाहिए. Yes. So yoga में मैंने सर्च किया what is goat yoga. Goat yoga is one of the things that sound like a joke, but it is very real. The idea is pretty simple. Yoga teacher leads a class of humans while goats interact with the yogis. Simple, very simple. Interacts with the yogis. म्हणजे basically physical interaction होगा. Basically. Physical interaction of what? Humans and goat. Humans and goat. तो क्या उससे क्या होगा? हाँ, exactly. Now the curiosity is increasing. Maybe screen share करें. नहीं, you tell us now. You tell us because this is. I don't think this is. This could be something like beer yoga. First of all, is it legal? Maybe let me just send. ये देख, I guess मैं link भेजता हूँ. Can you share the screen, Pranav? I don't want to, but I have to. तेरा चैनल. तो बेसिकली योगा में जितने आसन्स हैं those come from जितने स्पीशीज हैं, राइट? उनसे आते हैं वो, राइट? So there are 84 lakh species
और 84 लाख स्पीशीज में मतलब उनने ऐसे डिवीजन करके दे हैव कम आउट विद 84 बेसिक आसनास, राइट? तो हर एक काइंड ऑफ सो इंटरैक्शन जो हम लोग ने सोचा था उतना कुछ हार्डकोर नहीं है, बट दिस इज समथिंग लाइक दिस. But what's the logic behind this? I am not sure. कि क्या करना क्या चाहते हो? बेसिक है, बहुत बेसिक है. इसमें क्या बेसिक है? This is just lifting more weight than your body weight. Yeah. Maybe वो वाला concept. Lifting more weight भी नहीं है. It's a very absurd idea. तुम एक तो एक किसी एनिमल को उठा के लाए हो and और तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो. You're just putting it on you. तुम्हें ज्यादा देर होल्ड करना है. Put a timer, do it. हाँ, exactly. अपने आप हेवी लगेगा बॉडी. गोट का जरूरत नहीं है. I am not sure what this is about. Please, my dear English friends, if you are watching this, stop making anything into anything. Please. I am not sure what that is about. Basically, the वो thing है ना कि हमें लगता है कि हम जब भी कुछ ऐसा मतलब ये अभी कॉन्वर्सेशन करने पे हमें पता चला टाइम कितना निकल गया है. We have no idea, right? But when we are doing meditation or plank or yoga, उस टाइम पे समझ में आता है कि यार plank is something I feel तब पता चलता है exactly टाइम कितना स्लो जाता है. टाइम स्लो हो गया. And there is a world record of plank of 6 hours. I just don't know how 6 hours. And that guy was sweating like I don't know, man. Wow. It works your entire body, now. Plank works your entire body. हाँ, पूरा body. भाई उसके लिए मेरा मैक्स आई गेस 3 मिनट था. 3 मिनट बहुत बड़ा था वो. That is good. Trust me. I was very slim at 43 seconds. 43 seconds. मेरा तो अभी कम हो चुका है. My limit has 40 seconds. अभी मैं I guess हाँ अभी मेरे पहले मैं 1 minute करती थी. Before COVID I could do 1 minute 1 minute 15 seconds तक मेरी limit थी. But yes, after COVID it has gone down very much. You were positive? You tested positive? Yes, in May. Okay, so welcome this to the May or last May? Last May or this May? This May. Probably she and Jayesh were आगे पीछे थोड़ा. हाँ हम आगे पीछे ही. मतलब मैं पहले कोविड पॉजिटिव थी, देन उसके बाद जयेश कोविड पॉजिटिव होता. हमने कहा वाह. Same here. I was positive and Jayesh was positive. So that basically we are the part of second wave, nothing else. हाँ, exactly. मैं बच गया हूँ दोनों वेव से. That is good. अच्छी बात है. Third wave is coming. बचे रहो. तब तक मेरे 2 वैक्सीन. हाँ, तब तक प्लीज टेक वैक्सीन. दोनों डोज लगवा लो. उसको अवॉइड मत करो. और वैक्सीन के बाद डोलो खाओ या फिर टैबलेट खाओ प्लीज. जस्ट अगर तुम्हें बुखार या कुछ और आता है तब. Otherwise it's fine. Pharmacist. Just pharmacist things. I think on this note we should wrap. Because I am hoping a lot more exciting things from you, Anshula. And it was because भाई I think I know this fact कि अगर कॉन्वर्सेशन चलते रहा तो बहुत चलेगा, बट प्रणय फिर बाद में मेरा दिमाग खाएगा. प्रणव इतना एडिटिंग करना. I don't think so कि इतने एडिटिंग होगा भी. सिर्फ स्टार्ट का कट करना है इसमें. अभी ये कट करना पड़ेगा. ये कट करना पड़ेगा. But no doubt I will just say this one thing कि बहुत ही raw और बहुत ही interesting conversation था आज का. और I think you just achieve whatever you are planning with this whole yoga thing. And because shout again out to her page. मैं यहाँ पे इसका वो नाम डाल दूँ. Shout Yogini. It goes by the name Yogini on Instagram. Yogini. And how excited are you? I'm pretty excited. मतलब this is something new I'm starting, like proper content creation type वाले उसमें. So I guess you should now. मेरे को भी. हाँ, actually I also have one. Sorry. Idea. मेरे पास एक idea है तुम्हारे आपके content के लिए कि like do start speaking on camera on that. I guess आपने अभी तक वो सिर्फ music पे किया है ना start.
and started writing. So I I guess have not become uploaded. like अभी वो आपने face कोर्स भी वाले कर लिया है visibility exactly नहीं है. But okay, you will come to that zone. There is a big, great level mentor for you, so no issue. Yes. I have learned a lot of things after having a conversation with him for 45 minutes. And Definitely. that 45 minutes has helped me so much. So आप तो काम करते हो उसके साथ. Actually, I was coming to this point कि how can you frame this journey of content writer to content creator if you want to frame in few words? I guess I was always a content creator. It's just that I never did it with the purpose of, just creating content. I was doing it for, मतलब मैं अभी भी शायद वो अपने लिए ही कर रही हूँ, but it somewhere वो एक होता है ना कि तुम उस चीज को एज अ बिजनेस देखने लगते हो, then it becomes a content creation part of it. क्योंकि देखो कंटेंट राइटिंग, ठीक है, जब तुम किसी भी चीज के साथ कंटेंट जोड़ रहे हो, राइट, इट इज अगेन समथिंग व्हिच यू आर मेकिंग अ ब्रांड आउट ऑफ इट, राइट. जब तक यू आर जस्ट राइटिंग थिंग्स, जब तक यू आर जस्ट पुटिंग वीडियोस, देन इट्स जस्ट simple things in life which you are sharing, right? Then when you put that word content, then it starts becoming your identity as such, right? Identity as a brand, like personal brand. So I guess that is the main journey. Like I have kind of accept कर लिया है मैंने कि maybe this is where I, right? Awesome. So that is the basic Awesome. journey. cannot say. मजा लाइक हाँ, ये पॉडकास्ट काफी मजेदार था प्रणव और अंशुला, बोथ ऑफ यू. लाइक हाँ, सो इन दी एंड मैं एक अभी फर्स्ट टाइम गेस्ट पॉडकास्ट है एंड दिस आइडिया स्टोलन फ्रॉम माय फेवरेट यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया जी. सो आई वांट यू टू टेल माय ऑडियंस समथिंग, लाइक कुछ अगर मतलब बोलना हो हमारे ऑडियंस को तो बोल दो इन दी एंड. In terms of what, like anything, any advice. Because ये चीज part of the script या part of the structure नहीं है. This is all of a sudden which Pranay is asking. So anything. Yeah. Okay. So anything that I want to like. So there could be 2 or 3 things which I would say to anybody who like approaches me for anything, right? One, कि अगर कभी तुम्हारे पास कोई सामने से कोई query लेके आता है, don't just उसको छोड़ो बात, उसे abandon मत कर दो. कि अगर तुम्हें हो सकता है तुम्हें नहीं पता उसके बारे में, हो सकता है कि you're not in a mood to tell about it, then always be open to a minimum courtesy conversation, right? That is very much necessary. And then second thing would be कि जो करना चाहते हो वो करो, ठीक है. ऑल्दो बहुत सारी चीजें होती है जो प्रैक्टिकल नहीं होती, और कई बार होता है कि प्रैक्टिकलिटी और तुम्हारी थिंकिंग में देयर इज नो बाइंडिंग एजेंट टू इट, राइट. बट देन कोशिश, द जर्नी, जो कहते हैं कि जर्नी इज इम्पोर्टेंट, तो फाइंड दैट बाइंडिंग एजेंट, राइट. उसको ढूंढना बंद मत करो कभी, ठीक है. हो सकता है कि तुम्हें सपोर्ट ना मिले, राइट. हो सकता है तुम्हारे घर से सपोर्ट ना मिले, हो सकता है सोसाइटी से सपोर्ट ना मिले उस चीज के लिए. बहुत सारे सपोर्ट हो सकते हैं, राइट. तो वो बाइंडिंग एजेंट ढूंढना कभी बंद मत करना. दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी. और थर्ड थिंग वुड बी कि यार जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चॉइस के हिसाब से सही है, राइट, unless it's illegal or unless it's something which could jeopardize your future, ठीक है, तब तक प्लीज डू इट, राइट. प्लीज डू इट. कैसे करना है, दैट इज समथिंग जो इससे पहले वाले पॉइंट पे बोला है. या यू विल फिगर आउट इवेंचुअली, राइट. बट देन हाँ, जो कहते हैं ना कि ड्रीम जो होते हैं, राइट, बहुत सारे चीजें होती हैं. लाइक यूजुअली जो हमारा अपब्रिंगिंग है, जो हमारी, दैट इज बेसिकली अबाउट कि तुम एक पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट कर लो, उसमें कंटिन्यू करो, यू विल गेट अ जॉब इन दैट, और हो गया, बट गुड टू गो फॉर लाइफ, राइट. एक होता है कि वेल सेटल्ड, जिसको कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैज बीन अचीव्ड, राइट. बट देन देयर इज अ पार्ट इन एवरीबॉडी, जो वो एक बच्चा होता है ना, तो
बच्चे से पूछो कि तुम्हें क्या बनना है बड़े होके, राइट? तो हर एक एज पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोलता है. कभी बोलता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, कभी बोलता है मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, कभी बहुत बहुत वियर्ड चीजें होती हैं कि कभी कोई बोलता है कि मेरे को रिक्शा वाला बनना है, राइट? बिकॉज उनको लगता है कि यार इट इज फन, राइट? रिक्शा वाला क्या है, उसको सिर्फ रिक्शा चलाना है, इट्स फन, राइट? बट देन दे डोंट नो कि उसके पीछे क्या हो रहा होता है, राइट? तो वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि जो तुम स्कूल में पेंटिंग करते थे बट बड़े होके पेंटिंग नहीं करते, तुम स्कूल में कुछ करते थे, राइट? तुम डांस करते थे, तुम गाना गाते थे, पर अब नहीं करते. तुम बुक्स पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते. वो जो नहीं करते हो, जब पहले करते थे, that part of yourself has been lost in this complete journey, right? तो वो जो छोटा सा पार्ट है ना, बचपन वाला, जो बचपना होता है, उसको खोने मत दो अपने आप से. That is very very necessary, while being an adult, कि वो जो एक बचपन वाला पार्ट है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहे, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग, कहना चाहिए, जो तुम्हें सेन रखेगा, मेंटली, when it comes to living life, right? जब when it comes to living life, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं. कभी काम अच्छा नहीं होता, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी there's an argument, right? तो जब हम बोलते हैं ना कि कोप अप मैकेनिज्म क्या है हमारा उस चीज से, तो यूजुअली लोगों को लगता है यार कि भाई अगर इंसान स्पिरिचुअल नहीं है तो देयर इज नो वे आउट ऑफ इट, राइट? But then again, when you think of it, like reading something, writing something, or doing anything that you love, like cooking भी हो सकता है, वो तुम सिलाई मशीन के साथ कुछ सीव कर रहे हो, that is also, so all these things are part of being spiritual, right? क्योंकि तुम उसमें अपना दिमाग सिर्फ एक ही चीज पे रख रहे हो, you are not going anywhere else, right? तो वो पार्ट हमेशा अपने पास रखो. That is very important. हाँ, मतलब she wants to say कोई एक थिंग पे डिपेंड मत रहो, बाकी चीजों पर भी डिपेंड करो. एक चीज मतलब बाकी चीजों में भी. आई एम सेइंग जो एक बचपन का एक पार्ट होता है ना, which we enjoy, but eventually we lose touch with it, right? क्योंकि लाइफ हैपन हो जाती है ना, तुम बड़े हो जाते हो, राइट? यू हैव अदर थिंग्स टू लुक टू, राइट? तुम्हारे पास एक जॉब होता है, तुम्हारे पास एक फैमिली होती है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अर्न इनफ टू हैव दैट फूड, शेल्टर, कपड़ा वाला चीज, राइट? बट वो एक सोल का एक पार्ट होता है तुम्हारे, जो दब के रह जाता है. उस पार्ट को दबने मत दो. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. इसलिए मैं आज भी कार्टून देखता हूँ. But to add on this point, I just want to say to Pranay ki let's not put our perspective in this. Let the audience put their perspective in this, because ये बहुत ही अलग लेवल पे बात किया. जो again I will say this, even I told this line in Jayesh का podcast after recording or after finishing the part कि I have to listen the podcast again to absorb few things. This is something like that. So thank you so much. I hope I made sense in this complete conversation. A lot. बहुत ज़्यादा. Like this was something. Okay, honestly, I will tell this कि बहुत ही rush में है मैं, and I am doing a lot of things because I hardly get 1 or 2 days to do things. So I am doing a lot of things throughout my day. But trust me, these 2 conversations which I have done today, one in the morning and one now, are the one because of which I can run more. I might even stay awake for the whole night because that's how energy is getting into me and I am feeling more happy. Dopamine तो भाई अलग level पे है. तो thank you so much for giving your valuable time. Thank you so much for coming. And thank you so much for having me. It was a pleasure. It was fun talking to you both. ये मैंने first time किया है, so I was a bit nervous at the starting, but yes. And I love those paintings behind you. Yeah. Thank you. I just love those paintings. And Pranay, just check out, there is one painting right at the bottom, right side, which is yin yang. Study what is yin yang. Yin yang, I know that. Then why do you want no war? Huh? I know. I just feel like that cabbie guy right now. No, sometimes yin and yang become together and brings up that yin yang is the peace sign, na, some another way.
नहीं पढ़ लो, गूगल पे जाके पढ़ लो। मैंने पढ़ा है उसके बारे में। आई It's रीड okay. द फिलोसफी बट आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर। Yeah, ओके चले sure. चलो बाय थैंक यू बाय। सो मच फॉर टॉकिंग। पीपल स्पॉटिफाई पे फॉलो कर लो, इतना याद रखो, बस स्पॉटिफाई पे फॉलो कर लो। हर पॉडकास्टर का एंड का इम्पोर्टेंट। Follow, yes, exactly. Follow हाँ। their podcast. That is Pravachan with PP. That is PP? Pranay and Pranav, right? Yeah. if I'm telling the right names, right? This Yeah, is yeah, perfect Pranav and names. Pranay. Yeah, Pranav and Pranay. That's it. Yes. Yeah. The difference is only So- one letter. Yes, Just and only. they तुम्हारा fix. I'm not sure. I have not noticed this yet. कि do you come up with episodes every Saturday or No. it's We are random? not fixed Let's yet. not talk about consistency over here. We have Not jobs which is just Right. eating our consistency. So, But yeah, we are trying so to they are come up making every. they are making very raw conversations over here, and they are very interesting conversations on their channel. So do check it out. Yeah. Yeah. Thank you so much for joining. Chalo. Thank you Do so like, much share, for and joining. subscribe. Yeah. Good night. ओके सो गाइस, हमारी जो अंशुला है उन्होंने एक वर्कशॉप शुरू किया है, बिगिनर्स लेवल योगा वर्कशॉप। शी इज़ ए योगा टीचर, यू नो दैट। अभी पॉडकास्ट देख लिया होगा तो उनको पता ही चल चुका होगा। उन्होंने एक योगा वर्कशॉप शुरू की है। जो डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाके चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, प्रॉपरली जाके उसको पढ़ो। उसका जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यू कैन जस्ट रजिस्टर देयर एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने योगिनी मैम जो है, मतलब योगिनी जो पेज है इंस्टाग्राम का, उसको भी मैंने टैग कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो उस पर जाके भी चेकआउट करो। अगर कोई डाउट्स है तो उनसे पूछ लो, जो भी है क्वेरीज। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो जाके रजिस्टर करो और एंजॉय करो योगा वर्कशॉप को। सो या हम मिलते हैं आपसे नए अगले पॉडकास्ट में या फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।